So, namaskar all of you. Judicial Service Mentorship Batch ର ଏଇ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। So, ଏଇ Judicial Service Mentorship Batch ରେ ଆମେ daily 100ଟା MCQ questions ଆଉ 6ଟା mains questions with ତାର model answers ଆମେ discuss କରୁଛୁ। Okay, जोटा कि आपण ऐप रे भी आपण पाउचंती। ओपन यूट्यूब रे ଆମେ 100ଟା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ 10ଟା क्वेश्चंस डिस्कस କରୁଛୁ ଆଉ 6ଟା ଭିତରୁ ଫର୍ଷ୍ଟ क्वेश्चन ଟା ଆମେ डिस्कस କରୁଛୁ। ओके, मेंस। सो लेट अस स्टार्ट। एबे हमरो सीआरपीसी चलछि। आपण जानिचंती जो नुआ एग्जाम्स हरिका हबो सेथरे क्लियरली मेंशन कराइछि कि सीआरपीसी आउ बीएनएसएस दीटा जाको पडिबो। ओके, तो आपण को सही वेटेज रे प्रिपरेशन करबा पडिबो। एमती नै कि ओल्ड लॉज हे गला बोल ताको छाडी देबे। ओके, एटलीस्ट आउ 2-3 वर्ष एई सेटअप टा रहिबो। तेणु नुआ पिला जो माने बीएनएसएस पढुचंती ताको बेसी प्राधान्य दियंतु, किंतु सीआरपीसी टाको भी आपण टिके जानिबा पई पडिबो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आजिर सीआरपीसी प्रीलिम्स पई जोटा रहउची सेक्शन 1 टू 10 आ ऊपर 100टा क्वेश्चंस अछि। हमें प्रथम 10टा क्वेश्चन डिस्कस करिबा। जो माने मेंटरशिप बैच रे किंबा हमरो जुडिशियल सर्विसेज इंटीग्रेटेड बैच करिकारे जॉइन करिसंती। ओके, से माने बेसिकली आपण ऐप रे एटा टेस्ट हिसाब रे भी दे परिबे, सो दैट यू विल गेट योर रैंक आउ आपण जानि परिबे कि ईच सेक्शन रे कोन कोन भूल होला। जदि आपण ताको गोटे बहु भलिया पढिया पे चाहते क्वेश्चन बैंक भलिया ताले पीडीएफ वाला भी अवेलेबल अछि, सेटा भी आपण कवर अप कर परिबे। ओके, तो जी क्वेश्चन दिया छी पर आंसर और एक्सप्लेनेशन दिया छी। एक्सप्लेनेशन ता बेसी इंपोर्टेंट काहे कि ना एक्सप्लेनेशन दु अलग क्वेश्चंस भी आसी परिबे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट देन। Question 1 को आसंतु। For an allegation to constitute a complaint under section 2D CRPC, which requirement is indispensable? It must identify the offender. It must be made to a magistrate with a view to his taking action under the code. So this will be correct. It must be necessarily be in writing. It must disclose a cognizable offense. So B will be the correct answer. Please go through the explanation. सेटा भी important बात। से explanation तो अलग किसी questions पे आसी गए। Question 2 को आसंतु। An offense punishable with imprisonment for exactly 2 years ordinarily gives rise to a summons case, a warrant case, a session case necessarily, a warrant case only if cognizable. So A is the answer, that is a summons case. Okay. तापर question 3 को आसंतु। Under section 3 subsection 3, a reference in pre-court enactment to a magistrate of the third class is ordinarily constituted as a reference to executive magistrate, judicial magistrate of the first class, metropolitan magistrate, judicial magistrate of the second class. So B is the answer. Okay. Question 4. अच्छा, आगु जीवा आगु हमरो जो नुआ बैच रोची टिल सक्सेस बैच सेटा 23rd अगस्त दैट इज संडे रु स्टार्ट होची। तो जो माने जॉइन करिया पे चाहउछे भी से बैच रे वेट करि भी थिले कि कोन नुआ बैच पे स्टार्ट होबो। दैट इज द डेट संडे अगस्त 23। ओके, एंड तार स्ट्रक्चर कोन मु कहि दोची, एटा लाइफ टाइम बैच। ता माने टिल सक्सेस यू कैन स्टडी 30 इयर्स रो वैलिडिटी आर रुहे। ता बाद आर मेजर जिंस है कि 9 एग्जाम्स आर कवर्ड। जो इंपोर्टेंट एग्जाम्स क्लैट है गला। ओके, अपन क्लैट पीजी यूजीसी नेट है गला। ए सब एग्जाम्स एथरे कवर होची। एपीपी है गला, एडीएल है गला, असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ जोटा, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके, बैंक एग्जाम जो लॉ ऑफिसर रो जो अपन लॉ ऑफिसर रो जो सब ओके एग्जाम्स जोड़ा होची पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रो से सब एथरे इंपोर्टेंट रहउची। सो गोटे ही कोर्स जोड़ा आपन को लॉ रो सब एग्जाम्स पे आपन को प्रिपरेशन करिवे। ता छोड़ा आपन को ओके जुडिशियल सर्विसेज द मेन ओके फोकस ऑफ दिस कोर्स। आउ ए जोटा में मेंटरशिप टेस्ट में देखु छु सेटा ऑलरेडी सेथरे इंक्लूडेड रहउची। ओके, सो रिमेंबर 23rd August ओके द न्यू बैच स्टार्ट। Generally every month हमारा
दीटा खंडे नुआ बैच स्टार्ट कर ओके क्वेश्चन 4%. Which chapters of CrPC apply by virtue of section 1 itself even in areas covered by special provision concerning Laga land and the specified tribal areas? Chapter 7, 8 and 9, chapter 8, 9, 10, chapter 8, 9 and 8, 10 and 11 or chapters 9, 10 and 11. So एटा टिके factual अछि अपन यदि मने रखि परथिबे ताले एटा कर परिबे. So C is the correct answer. 8, 10 and 11. Okay. Question 5 को आसंतो. Which expression under section 2 is defined by express cross reference to section 173 subsection 2? Complaint, police report, cognizable case or judicial proceeding. So police report is the correct answer. माने जो थरा statute रे mention करा है 173 2. Okay. Question 6 को आसंतो. For the purpose of section 2I, a proceeding may be a judicial proceeding even when evidence may legally be taken on oath, although none has been taken. Evidence can never legally be taken on oath. It is conducted exclusively by police. It involves only administrative license. Okay, so A is the correct answer. Evidence may legally be taken on oath, although none has yet been taken. Okay. Question 7%. The police officer investigates information initially treated as cognizable. The investigation ultimately discloses a non-cognizable offense and he submits the resulting report. For the definition of complaint, the report is always a police report and can never be a complaint. Deemed to be a complaint with the reporting officer deemed to be the complainant. A complaint only if magistrate first converts it by order. And D, neither a complaint nor a police report. So B will be the answer. Deemed to be a complaint with the reporting officer deemed the complainant. Question 8 question. Under section 2J, the local jurisdiction of a court or magistrate can never exceed one district, must correspond to police district, can comprise the whole state only with high court notification, and may comprise the whole or any part of the state as specified by state government notification. So D is the correct answer. May comprise the whole or any part of state as specified by state government notification. Okay. Question 9%. In the absence of special state government direction, who may fall within officer in charge of police station when the regular officer is absent? Option A, the police officer present who is next in rank and is above the rank of constable. B, any constable having the longest service. C, every police officer present in the station. Or D, the senior most civilian employee of the station. So A is the correct answer. The police officer present who is next in rank and above the rank of constable. As your last question, Rota. A special penal statute creates an offense and expressly prescribes a procedure inconsistent with the ordinary CrPC procedure. Which proposition is correct? The CrPC automatically nullifies the special procedure. Only the punishment provision of the special act survives. The special procedure governs subject to any specific contrary provision in the CrPC. The CrPC applies exclusively because every offense is criminal. So C is the correct answer. The special procedure governs subject to any specific contrary provisions in the CrPC. So जो मैंने mentorship batch रे अछंती, you can go to the live test section. और ए टेस्ट टाको गोटे क्विज हिसाब रे जेंति एग्जाम रे आपण देबे गोटे 90 मिनिट्स रो क्विज हिसाब रे आपण दे परिबे जोथरे 100 टा क्वेश्चंस अछि. ओके 1 mark and negative 0.25 marks. If you want it that way. If you want to read it initially preparation करूचंती और आपण पढुचंती
आ गोटे क्वेश्चन बैंक हिसाब से पढ़ा पे चाहिए ताले ए पीडीएफ टा यूज करि पारि ओके सो एटा हमें कवर करलु आज सेक्शन 1 to 10 सो दोज हु आर इंटरेस्टेड जो माने सेल्फ स्टडी करछंती किंतु सेक्शन वाइज आंसर लिखिया पे चाहछंती एंड एमसीक्यू सॉल्व करिया पे चाहछंती दैट मींस इवैल्यूएशन पार्ट जोटा रहला बोथ प्रीलिम्स इवैल्यूएशन और मेंस ऑफ इवैल्यूएशन ताहले आपण एई कोर्स से जॉइन कर परिवे जो माने हमरा इंटीग्रेटेड बैच जॉइन करछंती एई कोर्स का इंक्लूडेड अछि नाउ लेट अस गो टू मेंस तो मेंस रे ऑलरेडी हमें 299 पर्यंत सारी देथिलो ओके सो 300 रे हमें स्टार्ट करिवे ठीक अछि सो एथरे एक्चुअली तीनटा सेट्स अछि एटा फर्स्ट सेट आउ दीटा सेट भी रहइबो जोथरे हमें जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स जोथरे डबल जेपीडी और फ्री लीगल एड 300 to 327 सेक्शंस रहिबो छोटा क्वेश्चन दोछि वी विल डिस्कस ओनली द फर्स्ट वन what is the test and guidelines if any regarding the exercise of power under subsection 1 of section 319 criminal procedure code 1973 whether such power can only be exercised if the court is satisfied that the accused summoned in all likelihood would be convicted support your answer with relevant case law तो 3 point maximum रो गोटे crisp introduction आपको दबार अछि you can go through it तापर आसिला स्टैट्यूटरी फाउंडेशन पर सो 319 रे कोन एग्जैक्टली दिया हिची ओके तापर 319 रो अलगा सब सेक्शंस रे कोन लिखा हिची सेकुडा भी आपण कहि परिबे ऑब्जेक्टिव कोन गोल कोन सेक्शन 319 ओके देन यू कैन गो फॉर द केसेस एठी टेंशन मन रखिबे मॉडल आंसर दिया होची आपन को पूरा कांसेप्ट ता बुझाय पे आपण बुझिगले कांसेप्ट तापर जाय कि मेन जिंसटा आपण लिखिबे ओके सो एई जो मॉडल आंसर ता वर्बटिम आपण लिखिबे जदी पूरा एग्जैक्ट सेम तो डिफिकल्ट हो सेटा समय भी हमर होबा काले ए सब क्वेश्चन उडा 15 मार्क क्वेश्चन आपण को 15 मिनिट मिलुछ ओके देन 319 अंडर द जो टेस्ट करके रहिछि जोटा कोर्ट कहिछ ओके सो whether the court must be satisfied that proposed accused would be in all likelihood be convicted okay so it again 319 रा एनालिसिस करके अपन को कहबार अछि okay so evidence रो माने कोन 319 रे okay so हरदीप सिंह केस टा इंपोर्टेंट देन अदर मेनी केसेस आर गिवन हमें गोटे केस ही लिखिले हम पे सफिशिएंट okay को स्टेज रे सेक्शन 319 को अपन एक्सरसाइज कर पाबो again some more cases okay जो न्यूली समन्ड अक्यूज्ड अछि तार राइट्स ऑफ सेफगार्ड पई कोन ओके प्रोविजंस अछि तापरे जुडिशियल प्रिंसिपल्स जोडा में देखिले इलस्ट्रेशन ता आपन को बुझिबा पई ओके सो दैट इज नॉट टू बी रिटन इन द एग्जाम अनलेस से पचारिछ मैक्सिम्स जदी आपन मन रख परचंदी बहुत बढ़िया जदी आपन मैक्सिम लिखुचंदी खाता रे ताहले गोटे इंस सबले मन रखिबे इफ यू आर राइटिंग मैक्सिम्स इन योर नोट then 1 mark 0.5 ru 1 mark जहां भी है एक्स्ट्रा अपन को आसीले ओके तो अगेन शॉर्ट कंक्लूजन 1 to 2 पॉइंट्स सब पॉइंट्स दिया छै देखो सब हेडिंग सब हेडिंग दिया छै बट एवरीथिंग इज रिटन इन पॉइंट्स नॉट इन पैराग्राफ्स जेटा बहुत इंपोर्टेंट ताको लिखि की पठेबे इवैल्यूएशन ओके दिस इज द जनरल माइंड मैप फॉर द क्वेश्चन माइंड मैप कोन जते रिवीजन करी फुनी औसरे क्वेश्चन ता कोन पड़ी total answer ता mind map ता पढ़ दिबे okay similarly rest 5 questions you can go through okay so writing is very important for judicial service exam ओके आउ थरे रिपीट करिया पे जो माने हम इंटीग्रेटेड टिल सक्सेस बैच जॉइन करिया पे चाहउचंती जोटा की मल्टीपल एग्जाम्स से थरे कवर होची तार नुवा बैच टा संडे दिन स्टार्ट होची August 23rd ओके सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन नमस्कार